Good evening, everyone. Thank you so much for coming here today. Thank you for taking the time. आप अपने सवाल प्लीज़ इंग्लिश हिंदी पंजाबी में पूछ लीजिए बट आज मैं जवाब सिर्फ इंग्लिश में दूंगी बिकॉज पूरे वर्ल्ड के लोग देख रहे हैं, सारे फैंस देख रहे हैं एंड I want everyone to understand what I'm saying. My name is Rachel Gupta. I am from India. I won the title of Miss Grand International in October of 2024, becoming the first Indian in the world to do so. I've been working for this title for most of my adult life. It's been a very difficult and long journey, and when India won its first crown last year, the whole world celebrated together. It was my dream come true. But the months that followed were a nightmare. They're not what any girl should go through, let alone someone who is representing her country on an international level. After many months of enduring all of the difficulties I was put through by the Miss Grand International organization, a few days ago I decided to officially resign, step down from my title, and return the crown back to the organization. I'm a person who values self-respect, who values women, who values integrity, and I am not one to sit by while an organization abuses, harasses, and exploits women right in front of me being one of them. I would like to clarify that during my 7 months as queen, I fulfilled every single obligation made to me by the Miss Grand International organization. I was there for every event, every requirement was fulfilled, and I never let go of a single responsibility. I would like to apologize to the national directors of Miss Grand Guatemala and all my fans in Guatemala because I was unable to attend my scheduled trip over there. I had been emailing the Miss Grand organization. I had been speaking to them, requesting them to make some changes and to provide what was necessary for me. But they did not fulfill any of their promises, and I was unable to do my country trip as planned. I would like everyone to know the truth behind why I made this decision. There are multiple reasons. First of all, the Miss Grand International organization did not fulfill their end of the contract. I was not, first of all, paid at all for any of the work that I did beyond the first month. I was not provided basic amenities such as food in the house that I'm staying or a place to stay that was actually close to grocery stores or, actually a part of society in Bangkok where I was staying. I was not provided the opportunity to travel, which was promised to me. 7 months later, I've only visited one country. I was harassed time and time again by the organizers, by the owners in particular, by Nawat and Teresa, constantly abusing mentally, making comments about my physical appearance, sexually harassing me in front of the whole world to see. As you can see, when I stepped down from my 24 hours, they launched an international online smear campaign against me, taking statements from people who have nothing to do with my situation to decredit me, to ruin my reputation. They brought my family unnecessarily into this matter, dragging them down. They tried to ruin my name and my reputation. They spread lies about me, my age, my background, every single thing that they could have lied about they did. But I'm doing this for all of the girls who are going to come after me, all of the girls who have the same dream as me. I want them to know what a disgusting organization this is. I want them to protect themselves, and I don't want a single girl in the world to be in the same position that I was in. Because even after winning, if you can be treated this way, it means the organizers have no regard for your rights, for your safety, and no respect for humans whatsoever. आपसे पहले जो एमजीए द्वारा पोस्ट करके कहा गया कि वो जो क्राउन है आपसे वापस ले रहे हैं क्योंकि उनसे जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उनकी शर्तें मुताबिक आप उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर सीरियस नहीं। What's the question? एमजीए द्वारा पहले अनाउंस किया Yes. आपने जो पोस्ट की उससे पहले ही जो एमजीए द्वारा
पोस्ट की गई थी, उन्होंने कहा कि आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आप उसे लेकर कॉन्ट्रैक्ट से सीरियस नहीं थे। Okay, and what is your question? Am I serious? Is that the question? I was very serious with my contract. Like I said, I fulfilled every single obligation that was mine. I attended every event. I did whatever was asked of me. Their contract is extremely exploitative. It only benefits them. I was asked to sign the contract immediately after winning. And of course, who isn't going to sign when you've won for your country for the very first time? It's such an honor that you'll sign whatever they put in front of you. I did sign it, and I did everything that was asked for me. They asked me to stay in Thailand until December. I stayed. They asked me to come back for 1 month. I came back. I attended all my events. I did whatever was asked of me, but they did not hold up their end of the agreement, which is in terms of providing me safety, in terms of providing me a safe environment, in terms of taking care of basic needs, and in terms of even just when it comes to giving me payments on time. I was living there in a house with absolutely no food provided to me. Nobody would message me for days at a time, no messages from them. And I'm all by myself. I don't hear anything from them at all. This is not what was in our contract at all. So these are the reasons why I chose to step down, because no girl should have to live under these conditions. No one should have to listen to the abuse, listen to the derogatory comments made by the organization, constantly attacking me, my body, my country, now my family. It's never ending with them. So I chose to step down. They're spreading lies about me to try and save their reputation, making fake screenshots, posting lies about my age, my date of birth, anything to try and ruin my reputation. But every single obligation that was made of me, I never complained to them. I never asked them for something extraordinary. I never asked for luxury. I just asked for basic respect and basic treatment that you would give to a human who is working for you. You mentioned about sexual harassment. When did that happen, and did you not complain about it? So the organizers have a very long history of sexually harassing women in front of the whole world in terms of the kind of comments they make, the derogatory remarks. It started I guess when their pageant started. There's a history back in 2015 with Miss Iceland, in 2022 with Miss Vietnam. And you can imagine, when working with such an organization, two things are relevant. Is that, number one, I had a front row seat to all these statements. When we were judging the Miss Grand Thailand shows, or any shows really, I have a front row seat to hear all of the disgusting, defamatory, derogatory remarks they make about women, about their bodies, about just the most irrelevant things. It used to make me feel ashamed that I'm sitting next to these people. And it started with me pretty early on, of course. I understand that when you're in such a position, you need to maintain your physique, you need to maintain a certain thing. That's in the contract, right? I'm not allowed to go above a certain weight or below a certain weight. But there is a way to handle that as well. They used to send their representatives to come to me to pinch different parts of my body. You need to lose weight here. You need to lose weight there. This is looking a little bit fat. You're not looking good here. You need to change your body shape. They routinely encourage and actually in some cases even mandate plastic surgery for certain girls. I was never one to feel pressured by any of that, but you want to feel like your organization is giving you a safe space. You have to feel like even if I gain weight or if my body changes, my organization supports me, and I've won because of my thoughts, my intellect, who I am as a person. But that was not true at all. And you can see, after telling the world that sexually harassed comments were made against me, after telling the world, what was their response? They post on their story, Nawat posts on his story, to sexually harass me further, zooming in on parts of my body to show the world and to spread his lies against whatever campaign he's decided the story he's decided to tell the world. So, I mean, it's so clear right here. I said that this is how they treat girls, and he just does it in front of the whole world. And now entire members of their organization are making videos about
my body, my behavior, like such targeted videos posting about my family as well, about their faces, their bodies, and this is not how any woman deserves to be treated. It could have very easily been a very clean resignation. It could have been, thank you so much for your time. I don't want to work here anymore because of these reasons. And they could have let it go. But within 24 hours, they showed their true colors and they started treating me publicly the way they treated me privately. Do you lodge a complaint on this with the Women Commission or the police? Honestly, right now it is incredibly complicated because there is so much attention on me at the moment, and it's not easy at all because there's people who support you and then there's people who aren't. I truly do believe this is an issue of women's rights. This is a worldwide issue because there are women from all countries applying to this organization. And I do feel that there is a need for justice over here. I don't want to see them have the right to treat another woman like this in the future. But since we are in different countries, it makes the legal system, the legal approach very complicated. But I definitely chose to speak up for this reason because I want women to know the truth about what happens when they join this organization. मैम, क्या आपको लगता है कि मैनिपुलेशन हुई है, हरासमेंट हुई है, क्या आपने कोई लीगल एक्शन लिया है, महिला आयोग ने को कंप्लेंट दायर की है? That's the question I just answered right now. We are going to discuss the possibility in the future, but it's very complicated because of differences in the legal systems of India and Thailand, right? It's not easy. I don't feel safe in Thailand. If I travel there, I don't know if my safety is guaranteed because they have launched a smear campaign against me to ruin my reputation, and I frankly don't feel safe visiting the country right now. But I definitely think that legal action should be taken against them. So many women have been victims in ways that they don't even recognize, and I understand this might not be everyone's experience, but this was mine, and I've seen it happen to other women, and no one deserves to go through this. जी, और जो लड़कियां इस फील्ड में जाना चाहती हैं, मॉडलिंग हो चाहे एक्ट्रेस बन रही हैं, तो उनके साथ अगर हरासमेंट होता है तो आप उनको क्या खास संदेश देना चाहते हो? I want to say that me sitting here today is the biggest example. If you feel exploited, harassed, or uncomfortable, you stand up and you speak for yourself. I gave up my crown after 3 or 4 years of working hard. I gave up my crown with the whole world watching me. I gave up my crown while an organization that has stood for over a dozen years targeted me to ruin my reputation. If I can do that, you have the strength to stand up for yourself as well. Do not accept disrespect or ill treatment or harassment from someone who doesn't see your value. रेचल, एक चीज पूछना चाहते हैं, कल जो क्राउन सेरेमनी है, तो क्राउन सेरेमनी के फिलीपींस की जो क्रिश्चियन ऑफिजी है उसे ये क्राउन दिया जाएगा, इसे लेकर क्या कहना है? I'm sure she must be feeling a lot of things right now. She must be feeling happy to be the new queen. She must be feeling confused, a little bit nervous and scared. Honestly, I'm praying for her. My heart is with her. I hope to God that she does not experience the same thing I did. But the truth is that this is the organization that she's choosing to work with. And I have a lot of respect for her. She comes from a beautiful country. And I'm truly praying that she has a good experience with the organization. I want her to, my message to her is to please protect yourself. And please know that when they show their true colors, which they will, I will be there for you. And please be safe and protect yourself, and do not let anyone make you feel uncomfortable or targeted. I really think that the organization might try extra hard to give her a good reign now because of all the negative press they've gotten. So I think they might try to prove that they're doing a good job with her, and they might, give her an extra special reign and be more attentive. And I really hope that that's the case. क्या आपको लगता है कि जैसे आपने कहा आप सेक्सुअल हरासमेंट हुए, मेंटली हरासमेंट हुए, तो लग रहा है कि ये वो लड़की को क्राउन दिया जा रहा है कि उसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा? No, not at all. It's not so direct, Seeing someone on the internet for their body is also sexually harassment. Telling someone they need to lose weight or gain weight, or the shape of their body is not correct, or their legs are not long enough, or their torso is too long, is also sexual harassment.
There's many different forms of it, and I don't know if she's experienced this with the organization yet, but I really hope she doesn't. I truly hope that she has a very comfortable and safe ring and she's able to protect herself. But actually, you mentioned two things. One, you said you were paid just for the first month. And what was actually there in the contract regarding payment when you signed the contract? And second, you said that you were only allowed to visit one country. Was there something else in the contract about visiting different countries when you signed it? Of course. So first of all, before you join Miss Grand International, their biggest advertising point is that you will travel the whole world as our ambassador, as our queen. You'll travel over 20 countries, right? And this is the dream that a lot of girls, including myself, go into it with. We want to be ambassadors. We want to work with organizations all over the world, with charities, with children, and actually use our voice for good. But it's been 7 months. I have only been to one country, that is the Czech Republic. And it makes it a question of whether they intended to uphold their end of the contract at all or not, And when it comes to the payment, when you win, you're entitled to a certain amount of prize money. And the prize money in the contract is stipulated that you will receive the whole amount upon completion of your 1 year as their queen. But of course, you have to pay for a lot of things on your own. You're paying for your own food, your own clothes, your own car rides. So many of the time you're living completely alone. It's not easy. So there is a monthly stipend which is promised. Unfortunately, that stipend was only paid to me for the first month, that is November, while all the top 10 girls were living in Thailand. After that, I did not see a single penny more. I was living in Thailand until the mid of December, and then I was there for another month throughout March. But I had to take care of all my expenses myself. It was really difficult because to explain to my parents that even after winning, I still have to rely on them for something as simple as food. Or if I'm traveling to the Czech Republic, I need to, again, ask for more money because I know the organization isn't holding up their end of the bargain and I haven't been paid at all. And of course, it's part of the contract that I should be paid, but it's not really even about the money. It's about being able to sustain yourself. If I'm living there in a house which is an hour away from the city center, I should at least be provided with food so that I don't have to order off of their Grab, which is like their Zomato, every single day, It's not sustainable at all. It's not healthy, and it is frankly extremely expensive after weeks and weeks of doing it. But I never saw that money. Even to this day, I have not been paid, and I've been with them for 7 months. So the question is where to go from here, Did you not ask them for the baby? Of course I did, and we were messaging back and forth for months. Even when I was in India, I provided them they asked for my bank information. I provided them all my bank account information. They offered me to either pay me in cash or to transfer the amount, whatever was my payment. They made an invoice, but I never received the payment. And I asked for updates multiple times, but they never sent the money. And it stipulates in the contract that I will be paid when I'm in Thailand. But even when I was in Thailand, I was not paid. I wasn't paid for any of the events I attended. I wasn't paid for the countries I visited. I wasn't paid my monthly stipend, nothing at all, just for the first month. Food and stay was not on the house. No, so stay they provide. They gave me a house which is on the outside of the city, 1 hour away. But I requested them, I'm vegetarian. I requested for them to provide me food, at least some fruit, so that I can eat every single day. My mom messaged multiple times because she was worried. It's so far away. It's very difficult to order food. It's difficult to order every single day. There's no pots and pans. I can't cook anything over there. I just said that if you could give me some fruit, that'll be enough for me. I will eat only fruit for 1 month, which is already a huge sacrifice. But they couldn't do that. And it is their responsibility that if they have a girl living with them, under contract with them, they need to make sure she has food to eat, at least. This is not a luxury to ask for. And I see a lot of people online, they're pointing out that, my expectations are too high, but I don't think expecting food is too much. I don't think expecting money for me to
meet my basic needs is too much. So what's next for us? What's next for me? So like, what do you intend to do? I would like to say that I like to think that I've always lived a life full of integrity, before the crown, during the crown, and I will continue to do so after giving up the crown as well. I was never chasing the money behind this, because there is no money, frankly. I was never chasing the fame. I was never chasing the prestige, which is why I was able to let go of this once my safety and my self-respect came into question with the organization. And it wasn't an easy decision, but I can honestly say that I'm proud of myself for standing up here, because a lot of people wouldn't be able to. A lot of people would not have the strength to do this. And I'm grateful for the support I've received from my family, from millions of fans all over the world who've heard my story and who've expressed the same concerns, and women who've been through the same situation with this organization and with other organizations. For me right now, I'm that spokesperson. I didn't ask for this responsibility, but it was placed upon my shoulders, and I will treat it delicately. A lot of women are going to use this to feel more confident to stand up for themselves in the future. And I want them to know they can do that. They can return a crown if they're not being taken care of, if they're not provided safety, and they can still come out of it stronger. What's next for me is that, honestly, I feel free now. I'm no longer trapped with working with people who are trying to exploit and harass and abuse me. And frankly, I can do anything I want. This is just the beginning for me. I'm a hardworking person, and I will always, always find the right place for me in this world. And I have the support of so many fans and my family. So this is just the beginning. पहली बात तो उनके पोस्ट करने से पहले मैंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था कि मैं अपना क्राउन वापस ले रही हूँ. 7 months की रेन के बाद मुझे उनके बारे में जो सच है वो पता लग ही गया है. उन्होंने मुझे जैसे ट्रीट किया है इन पिछले 7 महीनों में, वो मैंने सारा अपने एक वीडियो में समझाया है. मुझे बेसिक अमेनिटीज़ नहीं दिए थे, खाना नहीं दिया था खाने के लिए. मुझे काफ़ी दिनों के लिए कोई कांटेक्ट भी नहीं करते थे. उधर एक तरह से बुलाकर मुझे छोड़ दिया था. मुझे अपने वर्क के लिए बिल्कुल भी पेमेंट नहीं मिली. मुझे कॉन्स्टेंटली हरास करते थे. मेरे बॉडी के बारे में कमेंट्स बंद नहीं होते थे कि यहाँ वेट ज़्यादा हो गया, यहाँ कम हो गया है, यहाँ से ये रिड्यूस करो, वो इंक्रीज़ करो. और इतना ज़्यादा मुझे मेंटली टॉर्चर और हरास किया गया 7 months के लिए. पहले मैंने बहुत टाइम के लिए कोशिश किया कि मैं सेल लूँ, मैं स्ट्रॉन्ग रहूँ, और पूरी इंडिया के लिए क्राउन जीता है, पूरी वर्ल्ड देख रही है, तो सबके लिए स्ट्रॉन्ग बनकर अपना काम करूँ. मैंने अपने सारे A to लेकर Z सारे ऑब्लिगेशंस मैंने अपने सारे ऑब्लिगेशंस फुलफिल किए. उन्होंने मेरे से जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे फुल किया है, मैंने कभी भी कंप्लेन नहीं किया, किसी भी वर्क को नो नहीं बोला. एंड एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया. मैंने बहुत रिस्पेक्टफुली एंड पोलाइटली उनसे बहुत बारी पूछा कि मुझे ये प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, मैं सेफ़ नहीं हूँ, या मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, प्लीज़ इनको ठीक करो. उन्होंने बिल्कुल भी मेरे प्रॉब्लम्स का कोई सलूशन नहीं दिया. उन्होंने मुझे ब्लेम किया, मुझे थ्रेटन किया, मुझे और ऊपर हरास किया. उस पॉइंट पे मुझे स्टैंड लेना पड़ा अपने लिए. मैंने उनको बोला कि मैं ऐसे नहीं काम कर सकती, अगर आप मुझे नहीं सपोर्ट करोगे तो फिर मैं अपना रेजिग्नेशन आपको दे रही हूँ, बिकॉज मैं इन कंडीशंस में आगे नहीं काम कर सकती. उसके बाद मैंने सोशल मीडिया पर अनाउंस कर दिया कि मैं स्टेप डाउन कर रही हूँ. और उनके उस चीज़ के बाद जो उन्होंने मेरे अगेंस्ट पूरे वर्ल्ड में ऑनलाइन जो कैंपेन किया है, मेरे बारे में लाइज जो स्प्रेड की हैं, जो झूठे काइंड ऑफ इंसल्ट्स दे रहे हैं, जो फॉल्स क्लेम्स कर रहे हैं, वो आप देख सकते हो. मुझे और ज़्यादा हरास किया जा रहा है ऑनलाइन. मेरे बारे में वीडियोस बना रहे हैं, लाइज स्प्रेड कर रहे हैं बिना प्रूफ के, एंड ये सिर्फ कर रहे हैं मुझे टारगेट करने के लिए एंड मेरी रेपुटेशन ख़राब करने के लिए. बट मुझे पता है कि जो मैंने आज स्टैंड लिया है, जो मैंने बोला है, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये
पूरे वर्ल्ड की वुमेन के लिए है जिनका ये ड्रीम है, जो एक दिन सोचेंगी कि हमने भी इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना है। मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि आप अपनी सेफ्टी को रिस्क में डाल रहे हो, आप अपने आप को हरासमेंट के लिए ओपन कर रहे हो, आप एक टॉक्सिक अब्यूसिव ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हो जहां ओनर्स को सिर्फ मनी के साथ कंसर्न है, आपकी सेफ्टी या रिस्पेक्ट के लिए कोई कंसर्न नहीं है। अगर बात की जाए तो पिछले दिन आपका ये डिस्प्यूट चला है और जो उन्होंने कहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो कॉन्ट्रैक्ट को लेकर उन्होंने कहा है कि जो रूल्स थे जो कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा गया था उसके अकॉर्डिंग आपने उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक नहीं चले और आप अदर और कॉन्ट्रैक्ट्स करके जो शूट्स वगैरह कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट ट्रू एट ऑल। जो भी मैं वर्क करती थी वो क्लियरली मेरे सोशल मीडिया पर था। वो मिस ग्रैंड ऑर्गेनाइजेशन भी पोस्ट कर रही थी, वो मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे फ़ोटोज़ शेयर करने के लिए ताकि वो भी डाल सकते हैं। मुझे उन्होंने अलाउ नहीं किया था इंडिया में वर्क करने के लिए, बिल्कुल भी मैंने नहीं किया। बहुत महीनों मैंने इंडिया में एब्सोल्युटली कुछ भी नहीं किया। जो मैंने 1-2 प्रोजेक्ट्स किए थे वो बिल्कुल अनपेड थे, उनको बताने के बाद किए हैं मैंने, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट वो अभी उसको स्पिन करके ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं उनके अगेंस्ट गई हूँ, जब एक्चुअली उन्होंने भी पोस्ट डाला है उस शूट के बारे में, उस वर्क के बारे में, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी पोस्ट कर रहे हैं और उनको पहले से पता था। तो ये एक बहुत बड़ी उन्होंने कैंपेन प्लान किया है कि मेरी कैसे उन्होंने क्रेडिबिलिटी ख़राब करनी है, कैसे लाइज बनाने हैं मेरे बारे में। और मुझे पता था ऐसा होगा, मैंने अपने वीडियो में भी बोला कि मैं अपना क्राउन दे रही हूँ और ये लोग कहीं पर भी नहीं रुकेंगे, ये मेरे बारे में कुछ भी लाइज स्प्रेड करेंगे अपने आप अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए। अभी फिलीपींस की जो लड़की है, क्राउन कल सेरेमनी है, उसे क्राउन दिया जा रहा है, तो उसे लग रहा है कि उसको भी जैसे आपने कहा है कि हरास किया जाता है या सेक्सुअल अब्यूज जो हरासमेंट की जाती है, मेंटली जो टॉर्चर किया जाता है, लग रहा है कि उसके साथ भी कुछ किया, उससे कॉम्प्रोमाइज़ किया जो उसे क्राउन दिया। ऑनेस्टली ये पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि अगर जो क्वीन है वो उसको क्राउन वो दे देती है या उसको रेजिग्नेशन अपना वो दे देती है तो वो फर्स्ट रनर आपको क्राउन दे देंगे। सो मुझे पता था ऑब्वियसली उसी को क्राउन देंगे। मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि मैं उसके लिए प्रे कर रही हूँ, ठीक है, कि वो इस टॉक्सिक ऑर्गेनाइजेशन में जा रही है। आई होप वो उसे रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करें, आई होप वो उसे ऐसे ना ट्रीट करें जैसे मुझे किया और सारे वुमेन को किया है। बट अब मैंने इसके बारे में इतना पब्लिकली बोला है कि वो नहीं कर सकते ऑनेस्टली, बिकॉज पूरी दुनिया उनकी तरफ देख रही है बहुत ज़्यादा ध्यान से, जितना सपोर्ट मिला है मुझे। और मुझे लगता है कि वो और ज़्यादा कोशिश वैसे उनको करना चाहिए कि उससे ऐसा एक्सपीरियंस ना हो। एंड मैं उसके लिए प्रे कर रही हूँ कि उसके अगले कई महीने अच्छे निकले हों, वो सेफ रहे और अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। एमजीआई के खिलाफ कोई लीगल एक्शन ले रहे हो आप या वुमेन कमीशन या अपने लॉयर से लग रहा है कि आप अगेंस्ट जो लड़ाई लड़ोगे इससे लेकर? अभी सारा जो लीगल प्रोसेस है वो चल ही रहा है। इंडिया और थाईलैंड के लॉज बहुत डिफरेंट है, यहाँ का केस वहाँ नहीं होता, वहाँ का यहाँ नहीं होता, इसलिए हम अभी यही डिस्कस कर रहे हैं। बिकॉज मैं तो ऑनेस्टली इस पॉइंट पर मैं रुक सकती हूँ, यू नो, बट मैं ऑनेस्टली नहीं चाहती कि कोई भी और वुमेन इस पैथ से निकले और ऐसे स्ट्रगल करे जैसे मैंने किया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो भी हो एटलीस्ट पूरे वर्ल्ड को अवेयरनेस हो कि ये ऐसे ट्रीट करते हैं वुमेन को। आप इधर बिल्कुल गलत हैं। रेचल ने पहले रिजाइन किया, पहले नोटिस भेजा, वो मैडम को पता है। 27 तारीख को नोटिस भेजा गया कि मेरी शर्तें पूरी करो, जो जो आपने बोला था पूरा करो। नहीं किया तो शी रिजाइंड। मेरे पास उसकी कॉपी है, मैं अभी देना नहीं चाहता, ऑनलाइन पढ़ी है आप, नीचे टाइमिंग देखिए। रेचल रिजाइंड फर्स्ट, उसके बाद उन्होंने पोस्ट कर दिया कि हमने तेरे को निकाल दिया। क्या बोलेंगे जब वो छोड़ी गई क्राउन? कोई दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो अपना क्राउन छोड़ना चाहता है। इसने हिम्मत की है, आप लोगों के सिर पर की है। क्राउन छोड़कर मैंने बोला आजा, इधर ही थी कि नहीं जाना हमने। जब आप कुछ दे ही नहीं रहे, कुछ कर ही नहीं रहे, रिस्पेक्ट तो दे दो यार, पैसा नहीं चाहिए, रिस्पेक्ट तो दे दो, वो भी नहीं दे रहे। तुसी उन्होंने 2 कंपनियां फसाता, जिस कंपनी के थ्रू, ग्लैमानंद के थ्रू वो जीती, वो वहां गए, उस मिस इंडिया बना के, वो ये जो मिस ग्रैंड इंडिया बना के वो ले गए इनको वहां पर बैंकॉक में उनके अंडर जीत की निखिल आनंद है। उसके बाद आपने उसका लाइसेंस ले लिया, दूसरे ने पैसे ज्यादा दे दिए। स्टार एंटरटेनमेंट दिल्ली की कंपनी है,
उनको दे दिया कि आपकी फ्रेंचाइज है। अब वो कहता क्वीन तो ओदी है, वो कहता मेरे नाल काम करो, कहता मेरे नाल काम करो। एमजीआई बोलती है अगर आप पुराने बंदे से काम करोगे तो आपका मैं क्राउन ले लूंगी। शुरू तो लैके जिदा आप बचपन च होंदी ना धमकियां। ये बात सही है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो शर्तों के मुताबिक रेचल जो उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक काम नहीं कर रहे थे। बिल्कुल गलत। उसने बिल्कुल शर्तों के हिसाब से काम किया। जो नोटिस भेजा गया उसमें भी लिखा कि मैं आपकी 7 महीने से वेट कर रही हूँ, आपने वादा किया इतनी कंट्रीज घुमाऊंगी, लेकिन आपने कहीं घुमाया ही नहीं। आप तो एक ही कंट्री में भेज के थक गए हो कि बस जी, आप कहते हो कि वहां चलो फलाने होटल में, वो उनको पैसे देते हैं, इस जगह जाना है, पैसे देते हैं। गुरुद्वारा साहब लेकर गए थाईलैंड के, वो सारे सिख कम्युनिटी, पूरी वीडियोस हैं, बड़ा मान सत्कार, दिवाली मनाई उन्होंने फिर से बुलाया कि आओ। कहते नहीं जाना, वो पैसे नहीं देंगे, उत्थे नहीं आपा जाना। वो कहती मेरा धर्म है, मेरे को तुमसे ना गाड़ी चाहिए ना पैसा चाहिए, मेरा जो फ्री टाइम है आई वांट टू गो देयर। मैं मेरे को लगता है मेरे घर आ गई हूँ अपने गुरुद्वारा साहब में। जब यहाँ भी उतरती है अमृतसर सीधा गोल्डन टेम्पल जाती है, ठीक है, धार्मिक है, सारा कुछ करती है। लेकिन अगर आपको अलाउ ना करें तो क्या करेंगे? आप उनके अंडर हो, आपको जेल में बंद कर दिया गया है, आपको पूछ नहीं रहे हैं, आपको मैट नहीं दे रहे, आप कह रहे हो वेट बढ़ रहा है। कोई लीगल एक्शन नहीं लिया? लीगल एक्शन देखते हैं कैसे होता है। दोनों जो एडवोकेट्स हैं वो देख रहे हैं वहाँ का लॉ और यहाँ का लॉ क्या अलाउ करता है, ठीक है। अगर कुछ होगा ऐसा, अगर वो कुछ करेंगे तो देन डेफिनेटली। ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਊਨ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਬਾਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਓਗੇ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਸੰਭਾਲਣ ਨੂੰ। ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ। ਝੰਡਾ ਆਪਣਾ ਉੱਪਰ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਲਦ ਦੇਖੋਗੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਟੈਲੈਂਟਡ। ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਰਿਆ ਗੁਪਤਾ ਉਹ ਲਿਰਿਲ ਦੀ ਐਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਕਈ ਐਡਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਫਿਲਮਸ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਘਰ ਆਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀਗੀ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਸੀਗੀ। ਖਾਣਾ ਹੁਣ ਘਰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਮਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਟਲ ਦਾ ਐਡਾ ਕੁ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬੈਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਊਨ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।